Watercolor is a form of artwork which is very close to my childhood memories. Perhaps one of the medium which I learned during my initial days in art class. Watercolor paintings are considered a unique way to creatively represent dreams, illusions, emotions, and bright feelings using water-soluble pigments. Hey guys, this is Soumya and welcome back to my channel. So today I am back with a new art video और आज की वीडियो में I'll be sharing with you how to make watercolor paintings. In fact, this video will be very much beneficial for the beginners जो अभी watercolor सीख रहे हैं. So आज मैं 3 अलग-अलग टाइप की लैंडस्केप्स बनाने जा रही हूँ with the help of watercolor और उसके लिए मैंने पेज को 3 पार्ट में बाइफिकेट कर लिए है. सो इन बिटवीन आई हैव यूज मास्किंग टेप्स ताकि एक पोर्शन का कलर दूसरे पोर्शन में स्पिल ना करे, क्योंकि वाटर कलर में एज वी ऑल नो वी हैव टू यूज अ लॉट ऑफ वाटर. सो यहाँ मैं तीनों लैंडस्केप्स जो है वेट ऑन वेट टेक्निक यूज़ करके बनाऊंगी. सो फॉर द वेट ऑन वेट टेक्निक सबसे पहले जब मैं स्काई पेंट करूँगी आई विल जस्ट गेट दैट पोर्शन ऑफ द पेपर वेट विद द हेल्प ऑफ ब्रश इन वाटर और उसके ऊपर तुरंत मैं कलर स्प्रेड करना शुरू करूँगी द वे आई वांट इट टू बी, एंड दोज कलर्स आर गोइंग टू गेट मिक्स नेचुरली एंड इट विल प्रोड्यूस अ वेरी ब्यूटिफुल इफेक्ट. So once the sky dries up, I'll start painting the land portion by using yellow, green and dark green colors. And initially I'll use the lighter shades, and then slowly once the lighter shade dries up I'll keep on using darker shades, because in watercolor this is the technique that we follow. We initially use the lighter shades and then we eventually give a finishing touch with the help of the darker shades. So here the first painting is done. Now I am working on the second scenery. So here I am making a sky with the help of vibrant colors like orange, purple, yellow. So this is more like a sunset painting, and below that I'll be making a tulip garden or a tulip field. So I'm trying to give the effects with the help of different colors so that it looks really vibrant and pretty. Well, personally speaking, I feel watercolor is a great medium for getting expressive with colors and marks. The medium's ability to produce layers of translucent colors lends itself to the possibility of deep saturation of colors. Well guys, coming back to my original painting, यहाँ मैं बहुत छोटे छोटे डिटेलिंग्स पे फोकस करूँगी और यही डिटेलिंग्स मेरी पेंटिंग को और ज़्यादा खूबसूरत बना देगा. जैसे कि देखिए मैंने दूर ये जो भी हिल्स एंड माउंटेन्स मैंने बनाए हैं लैंडस्केप्स में, उसमें पीछे मैंने ट्रीज़ वगैरह बनाए हैं. आई हैव शोड अ लॉट ऑफ डिटेलिंग्स ऑन द ग्रास, ऑन द ट्यूलिप्स, एंड इस तीसरे लैंडस्केप में भी I'll put a lot of focus on the water and I'll try to make the reflections of the trees and all in the water. आज इस आर्टवर्क को बनाते टाइम मेरी ना बचपन की यादें ताज़ा हो गई. बचपन में मैं वाटर कलर बहुत यूज़ करती थी एंड दिस वाज वन ऑफ माय फेवरेट मीडियम्स ऑफ आर्टवर्क. और वाटर कलर से बनाए हुए मेरी बहुत सारी पेंटिंग्स आज भी मेरी मम्मी पापा के घर में है. इनफैक्ट बचपन में जब मैं कोई बहुत ही ब्यूटीफुल सा कोई भी पेंटिंग बनाती थी, माई मॉम यूज टू टेक दैट पेंटिंग एंड उसको फ्रेम कराती थी और फिर उसको ना वॉल में लगा के टांग के रखती थी. सो दैट वॉज अ बिग सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर मी. Well, so coming back to this painting, I'm almost done with it. थोड़ा सा ही और फिनिशिंग टच देना है and then we are done. सो गाइज़, अगर आपको अब तक का मेरा प्रोसेस पसंद आया है तो प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक शेयर बटन, एंड फॉर अदर्स प्लीज़ ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज़ कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, और अगर आप कर भी रहे हो तो यू आर नॉट प्रेसिंग द बेल आइकॉन, जिसकी वजह से शायद अपकमिंग वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक नहीं पहुँच रहा है.
So please do not forget to like, share and subscribe the channel. For the time being, I'm signing off for the day and see you again until in my next video.